All right. Can you please confirm if you can hear me? I thought I was talking with the mic muted. Yes, sir. Okay. So, Mutahid, can you please check if people working in their groups or they are not? Thank you, Daniel. In the meanwhile, those who are present in the call, if I can, yes, if I can ask them a few questions. Have you gone through the case study? Yes, no. Okay. What I can do is I can unmute all of you, so you can take your turns and let me know. Let's run a dialogue instead of a chat. So Varda is going through it. Murtaza has done it. Ibsham Ahmad Khan has done it. Okay. All of you have microphone control now, so if you want to unmute and speak up, please do. What we still can do is that if you've worked on your presentation in groups that you've agreed, we can begin with the presentations at 7 o'clock, which means 15 minutes from now, we will start with the presentation. Is that okay with all of you? Mutahid, can you confirm? सर हमने जो सॉरी यस जी सर ग्रुप 5 में अभी तक निम्रा चौधरी और आबिद अली ने ज्वाइन किया है और हमारे पास जो ग्रुप 2 है उसमें दानियाल एंड अर्शिया ने ज्वाइन किया है। ग्रुप 3 में अभी तक किसी ने ज्वाइन नहीं किया। ग्रुप 1 और ग्रुप 5 में भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। ओके मुताहिद, कैन यू चेक इन द व्हाट्सएप ग्रुप? रिजवान कह रहे हैं कि वहाँ जो केस स्टडी पड़ी हुई है वो कॉर्पोरेट डेयरी फार्म वाली है। कैन यू चेक इफ दैट्स द केस? यस यस सर वो डेयरी फार्म वाली है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस करने ही वाला था। मैंने कहा अगर आप दूसरी आपके पास अगर आप शेयर कर सके व्हाट्सएप ग्रुप पे, क्योंकि मैंने वही अपलोड की है जो उसमें थी। सेम सेम है ना सर? दोनों दोनों ग्रुप एम और ग्रुप ए के लिए सेम स्टडी केस है। एक सेकंड रुकें। मैंने जो 6 डिजिट्स ग्रुप A+S में शेयर की हुई है स्टडी, वो तो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट बाय वर्सेस रेंट डायलेमा है। रिजवान कहाँ से पिक कर रहे हैं? आज 232 पे ग्रुप A+S में जो मैंने केस स्टडी शेयर की हुई है, दैट इज रेंट वर्सेस बाय। अच्छा मुतहिद, आपने जो इधर अपलोड की हुई है वो गलत है। मुतहिद, यस सर मैं रिमूव कर देता हूँ इसको। ठीक है, वहां से अपलोड कर दें। आपके पास दूसरे वाली है या मैं कर दूं? मेरे पास खुली हुई है। सर काइंडली अगर आप इफ यू कैन बिकॉज
सीरीज 1 अपलोड हो चुकी है अब. थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट. शाम आप कह रहे हैं ग्रुप 5 फुल हो चुका हुआ है, लेकिन अभी तक ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के अंदर कोई लोग हैं ही नहीं. तो आप लोग ग्रुप 2 बना लें, ग्रुप 3 बना लें. किसी ने वो नेम्स टेकअप नहीं किए हुए अभी तक. इन द मीन वाइल मुझे आपसे कुछ बातें और भी करनी थी. मैंने जो कन्वर्सेशन चल रही थी इन द व्हाट्सएप ग्रुप being led by 2 or 3 individuals, that was a little disturbing to me. I don't know आप लोगों का क्या ओपिनियन है इसके बारे में. But I went to the uh, I went into the detail with the people who were mainly leading that conversation, and I'm pointing at, the conversation around employment and training opportunities, and ACCA spending all its efforts into marketing and uh, and and promotion, and not looking at its current stakeholders, looking at the salary situation in the market. So it was quite a disturbing conversation that I noticed, and rightly so. There are a few other individuals who were also disturbed because of that. मैं एक particular नाम, मेरा ख्याल है Murtaza was the one who had sort of repented this information. But I had a word with Unib today. Uh, Unfortunately, what's happening is that his main plea was that he was being offered a training opportunity at a firm, and the firm appears to be an approved employer at the gold status on the list available through ACCA Careers, and that firm offered him 2,500 rupees as a stipend. Okay, so let me clarify a few things here. But I understand, but see, जो पहले मैं ये the situation explain कर लूँ, फिर मैं खास तौर पे इस बात की तरफ आना चाहूँगा कि despite having done, a lot of discussions, a lot of, I would not call it brainwashing, I would call it mindset, developing a particular mindset. Despite having done a lot of that, there are a few individuals who come up and twist the entire, the entire mood in the group. And unfortunately, जो लोग, and this is there is an empirical evidence that it happens this way, that people who are negatively biased, or people who are unhappy, they are 25 at least 25% louder than the ones who are satisfied or happy. And unfortunately, that is what I noticed here as well. There are about 200 individuals in the group. There were 2 or 3 individuals who leading the conversation. The rest of the group was just listening or maybe not even watching. But मुझे जो ज़्यादा वरी हुई वो ये थी कि यार अगर हमने ये माइंडसेट चेंज किया भी है, तो फिर why is it that a few individuals uh, are still coming up with the negativity that there was even before we started the 6 digits for affiliates and students. So, I went back and checked कि इन साहब ने कितनी sessions 6 digit के attend किए, and here it was that of course he had not been regular, he had not been attending the activity as it was supposed to be done. So I sat down later in the evening, and I decided कि हमें जो अपना rule था for considering an individual a 6 digits graduate upon completion, उसको देखना पड़ेगा कि हमने क्या अनाउंस किया था, और हमें उसको परस्यू करना पड़ेगा वेरी स्ट्रांगली.
Ab, the fact of the matter is that 85% participation was mandatory. What we're going to do is strictly impose that, and I am not just going to look at you know 50 classes में से कौन 85% sessions attend करके गया. I'm not just going to look at that. I'm going to look at the number of hours of participation. Okay. So मैं ये देखूंगा कि कितने लोगों ने 100 hours में से 85 hours पूरे किए हैं. ओके. और जिन्होंने लेस देन 85 hours पूरे किए होंगे हमें उनको have to uh, when you've been through entire process, then you emerge as an individual with a complete different mindset. You emerge as an individual who's more prospective than respective, and uh, who's more energized, who's more motivated, who's more determined, and therefore they're able to then very quickly achieve the objective of the group also. Somebody who has half-heartedly attended a few sessions here and there and still has not been able to come out of the negative mindset, they are the ones who unfortunately will have to face the brunt. Um, now, उसूलन तो मैं ये चाहता था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें से क्वालिफाई करते उतना अच्छा था. But unfortunately, looking at the situation, uh, we will have to uh, we will have to take a very different view of how do we consider an individual value. But at the same time, um, I think आप लोग those who have been regular in the groups, मुझे कई नाम individuals के नाम हैं जो I can remember, and I have a complete record of how much participation have all of you been showing. तो मेरा ये ख्याल है कि अगर ऐसी नेगेटिविटी की ग्रुप में आती है तो आप उसको प्लीज उसको ऑब्जेक्ट किया करें, उसको करेक्ट किया करें. मैं आई वुड नॉट वांट you to try to silence such individuals. I would want you to rebut that individual, to ask for evidences. Now, I gave examples to this person, Munib and the others. I gave examples, and he was talking about firms पैसे नहीं देती, firms hire नहीं करती, and I told him that look, uh, फहीम अभी हम वही उसी की बात कर रहे हैं. So I told him कि देखो आप जिन firms की बात कर रहे हो वो low tier या fourth tier या fifth tier firms हैं. Let me talk about the big four, and then I gave him examples. So for example, if you look at um, EY Lahore, the partner audit, there are two sections in EY Lahore. The partner audit is a member of ACCA, and he has been a member of the members network panel of ACCA, Abdullah Fahad Masood. If you look at uh, Deloitte, um, the executive director in Deloitte Karachi uh, for their advisory business is Maaz Masood Ansari, who is a solo ACCA member. He's not a member of any other accounting body. If you look at, for example, Harvard Hussain, which is a mid-tier to a top 10 audit firm in Pakistan. Pro Harvard is the organization, it's the actual partner. The partner audit, Amin Ali, is an ACCA member. Fine, he's an ICAP member as well, but he has also been a member of the ACCA Pakistan members network panel. So, and these are organizations who, of course, are quite demanding. I mean, nobody in this business of setting up a firm will give you a free ride. They're all going to be demanding, and rightly so.
ट्रेनिंग जो होती है वो कहीं पे भी, इट्स नॉट टू बी टेकन इजीली, इट्स नॉट टू बी टेकन समथिंग कि हम हाफ हार्टेड काम करेंगे एंड वी गेट थ्रू as a successful qualified accountant. These firms are businesses, and when they are businesses, they have to make sure that they earn money by selling services. Okay, and those services are delivered by trainees working in those organizations. Now, very simply speaking, yeah, they are going to make you work. Okay, but at the same time, um, they also ensure that these people continue with them. Okay, they also make sure that ACCA trainees, if they've joined a firm, they complete their promise. They fulfill their promise, right? They stay with the firm for the time period agreed, right? If it is 3 years, they continue to stay with them for 3 years. And I think ये बात तो ACCA की रूल बुक के अलावा even our religion teaches us कि आपने अगर कोई promise किया है, पहली बात तो उसको लिख लिया करें, but secondly fulfill the promise. ये क्या हुआ कि एक दिन एक ट्रेनी ने डिसाइड किया कि मुझे दूसरी फर्म से या कॉर्पोरेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से 5-8 हजार रुपए ज्यादा मिल रहे हैं, आई शुड देयरफॉर क्विट एंड जॉइन द अदर ऑर्गेनाइजेशन. And इस तरह के cases हैं. I can name a firm particularly, or rather not naming. There's no point in naming individuals a firm. There's a firm being run by again a dual member, और वो हमारे काफी सीनियर मेंबर हैं. उन्होंने MNP का भी पार्ट रहे हैं एंड वैसे भी ICAP के भी मेंबर हैं वो. So he is running his own firm. And one fine morning he calls me up and he says that I had hired ACCA trainees, and these ACCA, this particular individual just left the organization without any notice, without serving any notice, and he has not returned my laptop and my office keys. Now, this is where if you are not keeping your promise, you are inducing a brand damage to ACCA. He was an ACCA member, and therefore much more considerate than any other individual who's a non-member, right? Had it been a non-member, he would have outrightly said, "Yeah, thank you very much. This is big damage done to my organization. I am never going to hire." I mean, it's as simple as that. I am never going to hire ACCAs anymore. अब आप सब लोगों का role as a community ये है that if you come across such an individual who has inflicted a brand damage to your body, you isolate that individual and you make sure that that individual's deed comes under a lot of pressure because of his wrongdoing, right? अगर उसका किया हुआ जो है वो बाकी सबको bear करना पड़ रहा है, उसका उसकी जो repercussions हैं वो बाकी ACCA trainings और students को within the pipeline उनको bear करनी पड़ रही हैं, तो ऐसे individual को हमें isolate करना चाहिए है, ऐसे community isolate करना चाहिए है, उसके ऊपर public pressure होना चाहिए कि वो अपनी training को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता. Now, ये तो हो गई एज ए कम्युनिटी हम लोग जो कर सकते हैं उसकी बात, लेकिन ACC के अपने रेगुलेशंस भी इस मामले में बहुत स्ट्रिंजेंट हैं. नाउ बिलीव यू मी, अगर हमने इस इंडिविजुअल का केस उठा के अपनी प्रोफेशनल कॉन्डक्ट टीम को भेज दिया होता तो ऑफ कोर्स उससे पहली स्टेज के ऊपर जो कन्वर्सेशन हुई, ही रिटर्न द लैपटॉप एंड द ऑफिस कीज एटसेट्रा, लेकिन अगर इसको उठा के हमने हेड ऑफिस भेज दिया होता, जो कि हम चाहते हैं कि भेज दिया जाए, तो स्ट्रेट अवे इसने जितनी एफर्ट की है अभी तक अपने पेपर्स पास करने में, he could have been suspended for life, which means all his effort, all his passing the exams, etc., would have gone to waste. So this is as harsh a judgment as there can be. However, without going into that debate कि हमें वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरी स्ट्रॉन्ग सजेशन होगी आप लोगों को कि आप लोग एज अ कम्युनिटी एक्ट करें, और जो आपको एज एन इंडिविजुअल या आपकी कम्युनिटी को हर्ट करने की कोशिश करता है उस पर आप चुप नहीं रहें. प्लीज ट्राई टू स्टॉप दैट इंडिविजुअल. ओके. खैर उन्नीब के साथ मैंने जो कन्वर्सेशन की थी उसके बाद द आउटकम इज दैट ऑफ कोर्स हिज हिज ओपिनियन वाज चेंज्ड.
जो अप्रूव्ड एम्प्लॉयर की बात कर रहा था, नीट में जो मेंशन किया हुआ था कि 2,500 रुपये ऑफर हुआ, 3,000 रुपये ऑफर हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। होता इस तरह है कि लेट सपोज आई एम एन इंडिविजुअल, मैं एक फर्म रन कर रहा हूँ। मुझे किसी ने कहा कि जी अगर आपने एसीसी का अप्रूव्ड एम्प्लॉय बन जाएंगे ना, तो आपका एक तो नाम उनकी डायरेक्टरी पे आ जाएगा, और दूसरी बात ये है कि आप उनके ट्रेनिंग्स को hire कर सकेंगे, राइट। अगेन फॉर फर्म्स, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो आप लोगों पे एज ट्रेनिंग्स बेस करता है। तो उनको अगर अच्छा टैलेंट नजर आएगा, वो फोर्स एसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन फिल करके अप्रूव्ड एम्प्लॉयर बन जाएंगे। ऑफ कोर्स उस अप्रूव्ड एम्प्लॉयर प्रोसेस के दौरान उनको कुछ कमिटमेंट्स देनी है, कुछ कुछ का उनको अपनी पॉलिसीज वगैरह एसीसी के साथ शेयर करनी है। But there are many a slip between the cup and the lip. What they actually do in practice as opposed to what they've written in that application, it can be two different things. और इसको चेक करने के लिए या डबल चेक करने के लिए एसीसी की जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम्स ऑन ग्राउंड होती हैं, जिनका काम दिन रात यही होता है कि एसीसी के एम्प्लॉयर्स के साथ इन कांटेक्ट रहें, उनको सपोर्ट करें, उनको अगर रिक्रूटमेंट की जरूरत है तो उनको इंडिविजुअल्स रेफर करें थ्रू एसीसी करियर्स, या अदरवाइज जो एसीसी के ट्रेनीज वहां पर काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। तो और ये भी चेक करें कि कि इन लोगों को क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं। तो एज अ गोल्ड अप्रूव्ड एम्प्लॉयर, पार्ट ऑफ द फीस paid by the students, part of the subscription amount is to be borne by the employer. Similarly, as a gold approved employer, उनको कुछ एग्जाम प्रिपरेशन लीव्स देनी होती हैं, और इसके अलावा स्टाइपेंड पे करना होता है, ऑल्दो स्टाइपेंड का एक अमाउंट फिक्स नहीं है इन दिस केस। ओके, तो ये वो फैक्टर्स हैं। बट ऑन टॉप ऑफ ऑल दैट, यू हैव अ चॉइस whether you want to join a firm that's offering you 2,500 rupees, or you want to join a firm which is offering you 10,000 or 12,000 or 20,000 or 40,000 or 60,000. That's entirely your decision. And believe you me, there are organizations in the marketplace which are offering much better than that. Okay. Uh, Talk about corporate sector. Uh, फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ जब मैं बिजनेस डेवलपमेंट टीम को हेड कर रहा था इन पाकिस्तान। पैकेजेस जो थी वो उस वक्त अप्रूव्ड एम्प्लॉयर बनी थी, और पैकेजेस का इंटायर स्टाइपेंड मॉडल जो था वो मैंने और उनके जो फाइनेंशियल कंट्रोलर थे, हम दोनों ने बैठ के बनाया था। तो सॉरी, मैं चेक कर लेता हूँ मेरी ऑडियो का कोई इशू तो नहीं हो रहा। अगर आपको हो रहा है तो प्लीज कॉन्टेक्ट कर देना, मेरे पास अभी ठीक चल रही है। तो और उसके मुताबिक, although it was not a decision imposed by ACCA on packages, लेकिन हम लोगों ने ये एग्री करवाया था कि देखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक टैलेंट रिक्रूट करते हैं तो वो आपके साथ 3 साल स्टिक ऑन करे, और इसके लिए आपकी पॉलिसीज जो हैं वो इंजीनियर होनी चाहिए, वो अनह्यूमनली नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने एग्री किया कि उस जमाने में जैसे सेट कि जी हम 15,000 रुपीज पर मंथ पे स्टार्ट करेंगे, विद अ फ्रेशली क्वालिफाइड affiliates and not students and members. Affiliates के साथ start करेंगे, as they continue to प्रोग्रेस इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर वो अपना 1 साल कंप्लीट करने के बाद दूसरे पे जाते हैं या दूसरे के बाद तीसरे पे जाते हैं, तो उनका एक डिसीजन ये था कि तीसरे साल के एंड पे जब वो बंदा एफिलिएट है और सारे पेपर्स पास हैं, तो उसको 35 to 40,000 रुपीज पे किया जाएगा, और उसके बाद वो मेंबर बन के चाहे तो वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के अपना करियर परस्यू कर ले एज अ मेंबर। अगर वो नहीं करना चाहता तो ही कैन कंटिन्यू एंड अप्लाई फॉर अपॉर्चुनिटीज कमिंग अप इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे बहुत से केसेस और ऐसी बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। आज भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस इसी किस्म के स्ट्रक्चर्स बनाती हैं। क्वेश्चन ये था कि व्हाई इज एसीसीए नॉट इम्पोजिंग ऑफ कोर्स, बट आई एग्री विद यू। ये मैं बात कर रहा हूँ एटलीस्ट अबाउट, मुझे मेंबर अफेयर्स के रोल में अब तकरीबन 4 साल हो गए मैं, तो मैं तकरीबन 6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, रफली अबाउट 6 years बैक। नाउ
इसी तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फॉर एग्जांपल एक्सो नोबेल में, कोका कोला में, आईसीआई में, पीएसओ में, पीआईए में, इन सब ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा भी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मैं इस वक्त ऑफ कोर्स आई कांट इवन थिंक अबाउट, वो मौजूद हैं। एस एन पी इस्लामाबाद के अंदर आई रिमेम्बर मेरे पास एक इंटर्न मेंबर अफेयर्स डिपार्टमेंट में उसने ज्वाइन किया था। उसने मेरे साथ 3 महीने काम किया इंटर्नशिप की, और उसके बाद ही लेफ्ट फॉर एस एन पी इस्लामाबाद। और आई रिमेम्बर एट दैट टाइम ही वाज ऑफर्ड 75,000 rupees as stipend at S&P in that of in Islamabad. So ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, राइट? इट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू एज एन इंडिविजुअल कि आप एक इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान, जिसमें भी हमने पिछले दिनों भी प्रैक्टिस भी की है, आप एक इंटरव्यू प्रोसेस में कैसे अपने एम्प्लॉयर को कन्विंस करते हैं, श्योरिटी देते हैं कि आपके पास जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो कैपेबिलिटीज हैं, जो नॉलेज है, जो स्किल्स है, जो माइंडसेट है, उससे ये ऑर्गेनाइजेशन कम अज कम 2.5 times ज्यादा वैल्यू डिलीवर आपको कर सकेंगे। कम अज कम 2.5 times ज्यादा वैल्यू डिलीवर कर सकेंगे। ओके, तो इट्स अ वेरी ओपन प्रोसेस। आपको कन्विंस करना है, आपको प्रिपेयर होके जाना है, आपको प्रीएम्प्ट करना है क्वेश्चंस को, आपको तैयार होके क्वेश्चंस में जाना है, एंड देन ऑफ कोर्स you have to go to the right organization also. Secondly, whenever people come to me saying कि जी मैं I am without a job and I want help, तो उस इंडिविजुअल के साथ मैं अक्सर बैठ जाता हूँ, उससे कहता हूँ अच्छा, एक एग्जांपल दूंगा। जब ये 9/11 हुआ था अमेरिका में, तो आई वाज वाचिंग टीवी प्रोग्राम्स। सीएनएन पे एक प्रोग्राम आ रहा था और उस पे ये था कि हाउ मेनी पीपल will be rendered, जो उन ट्विन टावर्स में काम करते थे, हाउ मेनी पीपल विल बी रेंडर्ड जॉबलेस। और प्रॉपर एक्सपर्ट्स टीवी के ऊपर बैठ के लोगों को एडवाइस कर रहे थे। मुझे एक पर्टिकुलर सेंटेंस उस डिस्कशन से याद है अरबी तक, और वो सेंटेंस ये था, फाइंडिंग अ जॉब इज अ फुल टाइम जॉब इन इटसेल्फ, विच मीन्स अगर आप रेगुलरली 9 to 5 वर्क करते हैं, इफ यू आर सॉरी आई थिंक लेट मी स्विच ऑफ माय वेबकैम इफ दैट्स कॉजिंग एन इशू। अगर आप 9 to 5 एक जॉब कर रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आपकी जॉब आप लूज कर देते हैं आप जॉब को, तो जॉब ढूंढना भी एक 9 to 5 टास्क होना चाहिए। ये नहीं कि आप you relax, you've sent a few resumes here and there, you're waiting for calls to arrive, आप अपना फोन हाथ में लिए बैठे हुए हैं सारा दिन कि जी अभी कॉल आ जाएगी। That's not how it is. It is a 9 to 5 job, right? Sit down in the morning, start working on how are you going to land a job, strategize it, and then make sure that you get that opportunity. तो मैं हर एक से ये कहता हूँ जो मेरे पास आता है ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, हेल्प चाहिए या फॉर एग्जांपल जॉब के लिए हेल्प चाहिए, मैं उनसे सबसे पहले कहता हूँ आपकी विश लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस किधर है। तो it's a worksheet that they have to start developing, और उसमें करना ये होता है कि आप with the kind of planning that you have done for your career, you have to come up with a list of organizations. उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या क्या ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस में can you find out if there is an ACCA member or an ACCA affiliate or any other individual who's related with ACCA? Can you find out if there is an individual available there? Can you get in touch with that individual? Don't say to that individual, "जी मुझे ये job दिला दें." Please don't do that. These are crutches, and I don't want you to, travel on walk on crutches first day of your life. Just ask about, what is the organization looking for in this position? How can I be the most suitable candidate for this position? Don't look for a sifarish or a reference, right? Simply try to get more information out. Okay,
then in the end, even go to the extent of asking, so who's the decision maker, right? What do you advise me to do? These are all good questions. Ask these questions, but come up with a complete worksheet about 30, 40, 50 different organizations. And every day sitting down, you should be researching these organizations. किस organization में क्या काम चल रहा है, किस सेक्टर से बिलोंग करती है, सेक्टर को क्या गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर्स हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है इस सेक्टर की, कौन कौन इस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है, सीएफओ कौन है, सीईओ कौन है, एचआर का हेड कौन है, एटसेट्रा. How difficult it is to come up with, with a complete worksheet where you have all these names laid out, and then there can be columns saying have you sent them your resume, right? So a tick if you've done that. Another column saying, did you follow up? A tick if you've done that. Were you called for an interview? Tick, you've done that. Uh, did you talk to any individual in this organization for more information? Tick, you've done that. Last column, what is the probability? Write down the probability. आप लोगों ने जो ओपा डॉक्यूमेंट पे वर्क किया था, does that plot give you an indication कि हमने किस तरह अपनी objective setting करनी है, किस तरह हमने अपनी activities को align करना है, right? So remember all that, right? And keep this very, very valuable information skill set available to yourself, okay? And then in the light of all that, if you start thinking that you're helpless, I'm so sorry, that's not the case. That is not the case at all. Okay? माशाल्लाह आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, and therefore I have full faith कि आप लोग you will inshallah do much better. Okay, and let's see. I'm sorry I've delivered a complete sermon straight up. कोई पौने घंटे का मैंने sermon deliver कर दिया, लेकिन these were important things, and I want you to feel motivated. I want you to feel energized. I want you to feel determined all the time, rather than just sitting back, with a sorry figure, feeling sorry over yourself, feeling helpless. Please don't be like that. I would never want to see even a single individual to be like that. Ji Varda, if you want to ask a question, please go on. आप unmute कर सकती हैं अपने आप को, otherwise I can do it. Ji Varda. Hello. Yes, I can I had a question from the interview. From the interview session, it was very packed, so I couldn't get the chance to ask it. जब उन्होंने कहा था that we have, in the question when they ask you what is your current salary, basically, do we have room to like play in that area as well? Yeah, do we just straight on tell them the exact salary that you have right now? That I want to ask. There is no point in hiding. They'll never lie about it. But if there has been a difference between your stipend and your salary, mention that. Tell them that you have not started earning a salary yet. It's your first opportunity and you're looking for a good start. There's nothing wrong with asking that. But you can tell that individual, look, I'm coming from a training background. I've completed my training, and during my training, this is the stipend that I was being offered. At the same time, if you've done your research right, if you know who the competitors of this particular organization where you've gone for an interview, if you know about them, if you know about a similar job at those organizations, there is no harm in mentioning a salary range in the industry for such a position. Okay, there is no harm. और एक बात आई एम नॉट श्योर मैंने आप लोगों को बताई है कि नहीं, आज जो आप केस स्टडी करने जा रहे हैं, ये रेंट वर्सेस बाय, ये केस स्टडी लम्स में प्रोफेसर हैं डॉक्टर फजल जवाद सैयद, उन्होंने लिखी हुई है. वो मेरे फाइनेंस के टीचर भी हैं. मैंने फाइनेंस के जितने सब्जेक्ट्स पढ़े थे, फाइनेंस स्ट्रैटेजी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारे मैंने इनसे पढ़े. तो इन्होंने मुझे ये कहा था कि never just throw your resumes around. And then number two, never shy off doing your salary discussion. Okay, if you give statements like, oh, I don't know, whatever your best practice is, I'm not sure how much you offer, don't do all that conversation, right? Be very clear in your mind, right? Be very determined that, look, the skills that I have
how much can you ask for such skills in the market? Let's suppose I have this nice little mug here, okay, and I want to, let's say, sell this mug, right? I am the owner. I would know what is the cost of buying such a mug in the market, okay, and therefore I would be able to attach a price tag to it. Similarly, if it's about yourself, if it's about your skills, if it's about what value can you offer to an organization and how important or how valuable or worthy will your services be to an organization, you can put a price tag to it yourself. Okay, so that's what the formula is. Never shy off, but always be prepared also at the same time. Don't just put an imaginary figure there, right? Do your research before asking for a particular salary. Okay, चलें जी, अब हम, I think we should revert to our presentation. I think Varda has gone offline. So let's go have a round of can all of you please tell me if you've read the case study and if any of the groups has prepared the presentation? Yes or no? Waiting. I'm looking at the questions box. How many of you have prepared a presentation and they've read the case study? Still reading, Fahim. Others? Groupings क्या हैं हमारी आज अब तक? Others, please give me an answer. G. Arshia, have you read it and is your presentation ready? When you say yes, sir, that means you have read it and your presentation is ready. Daniel Ahmed, you've read the case study? Okay. So can we start with Arshia, your group? If the presentation is ready, can we start with your group? Okay, here comes another little speech. Okay. All right, Arshia, how long will it take for you to be prepared with your presentation? 10 minutes, 7:30, is it fine? हम 1 घंटे में फिर एटलीस्ट कुछ presentations run करना चाहेंगे. जी Arshia, you're unmuted, you can speak. Assalamu alaikum, sir. Can you hear me? Assalamu alaikum. Yes, loud and clear. सर हम प्रेजेंटेशन पे वर्कआउट कर रहे हैं. एक्चुअली हमारे जो टीम मेंबर्स थे वो मोस्टली दे वर एट वर्क, तो अभी रिसेंटली बस टीम कंप्लीट हुई है और हम वी आर एट एडमिट ऑफ प्रेजेंटेशन. Okay. We'll be presenting in 10 minutes, inshallah. All right. How long will it take you to come up with the presentation? Sir, 10 minutes, inshallah. 10 minutes. Great. आप ठीक है, आप लोग जाएं अपनी presentation complete करें, वापस आएं. I am looking at the other teams as well. So Arshia's was team number 1. अगर आप लोग Arshia सब लोग मौजूद हैं team number 1, आप लोग link sign up करके वहाँ पर you can start your work. Daniel, what about you? Okay, Arshia, ठीक है. All right. जी दानियाल, बाकी टीम्स किधर हैं? टीम लीडर्स हैं कोई अवेलेबल यहाँ पर? टीम 1, टीम 3, टीम 4, टीम 5? No answers?
मुत्तहिद आप प्लीज चेक कीजिए ऑलरेडी टीम्स के अंदर काम कर रहे हैं लोग या नहीं. राइट सर. Okay, so the rest of you who are listening, I wanted to very quickly say a few things about presentation skills also. Now, remember, uh, I think uh, presentation skills or coming up with a presentation or delivering a presentation, this is an extremely important and useful skill. And when you're talking about earning a handsome salary, the most important thing um that matters there is कि आप कितनी effective presentation deliver कर सकते हैं. ठीक है, आपकी presentation delivery style कितना effective है. And you may be, I mean, when I say effective, that doesn't mean कि आप English कितनी अच्छी बोल सकते हैं या आप presentation की slides कितनी अच्छी बना सकते हैं. It actually means कि, I mean, yes, of course, if you can converse conveniently, fluently. Number two, if you have made effective, interesting, attention-grabbing slides. And number three, if you can deliver the message very well also. If the content of your presentation is also spot on, which means that you have to meet the expectations of your listeners when you're making a presentation. Okay? अगर आपने अपने listeners की expectations meet नहीं की हैं या वो कुछ expect कर रहे थे और आप कुछ deliver कर रहे थे, that will not be an effective presentation. So it is extremely important कि ये skill आप लोगों के अंदर मौजूद हो, confidence हो आप लोगों के अंदर for you to be able to deliver these presentations, और आप लोग prepared हो fully to deliver these presentations as well. Okay? So हमने इस पूरे वीक में जो प्रैक्टिस करनी है वो यही है कि आपको एक केस स्टडी दी है, आपको थोड़ा सा टाइम दिया है, आपने उस केस स्टडी को अंडरस्टैंड करना है, उसमें से एक हाई लेवल समरी निकालनी है, एक 10 मिनट की प्रेजेंटेशन, ओनली 10 मिनट्स की प्रेजेंटेशन, नॉट लॉन्गर देन दैट, राइट, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 5 स्लाइड्स हो, 5 से ज्यादा स्लाइड्स भी ना हो. ठीक है, आपने ये बनानी है, लेकिन उसको इफेक्टिवली डिलीवर करना. ठीक है, इफेक्टिवली डिलीवर करना. Number two, एक observation from the other groups that I am running. अक्सर इन group dynamics में ये हो रहा होता है कि group का जो एक leader है वो presentation deliver कर देता है, बाकी सब लोग जो हैं उसके पीछे छुप जाते हैं. यानी कि वो ये कहते हैं कि हम presentation तो deliver नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई question हुआ तो उसको answer कर देंगे. That's not good enough. Everybody in the group should participate in delivering the presentation, which means अगर 5 slides हैं, 5 लोग हैं, हर बंदा एक slide deliver करे. Okay? Unless आप लोग इस opportunity को use नहीं करेंगे to start delivering presentation. आज पहली केस स्टडी है, इसलिए मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं लीवे दे रहा हूँ. आज आफ्टर दिस सेशन या कल मैं आपको दूसरी केस स्टडी आपके हवाले कर दूँ, और फिर तीसरी, और फिर चौथी, और फिर 5 केस स्टडीज आप लोग इन सब पे वर्क करेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हुआ है कि नहीं. आई डोंट वांट टू सी अ सिंगल नेम इन द लिस्ट ऑफ अटेंडीज जो कि मुझे ये बताए कि मैंने प्रेजेंटेशन डिलीवर नहीं की, मैंने एक स्लाइड या 2 स्लाइड प्रेजेंट नहीं की, मैंने क्वेश्चंस आंसर नहीं किए थे, मैंने प्रेजेंटेशन की प्रेपरेशन में रोल प्ले नहीं किया, राइट. मैं जो टीम मीटिंग्स हो रही थी उसके अंदर भी चुपचाप बैठा रहा था, जो लोगों ने किया उन्होंने कर दिया. जो बाकी लोग थे मेरे टीम के वो ज्यादा वोकल थे, लिहाजा मैं सिर्फ उनकी बातें सुनता रहा. आई डोंट वांट टू सी दैट. ओके, सो
ये पूरा वीक जो है ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हम ऑल्दो हम वी विल बी मीटिंग ऑन Tuesdays, Thursdays and Saturdays only, but आप effectively काम throughout the week कर रहे हैं, right? और ये important है क्योंकि इसके बाद के जो sessions हैं, अब उसमें सजीद वापस आएंगे, फिर इसमें आयला ने एक सेशन डिलीवर करना है. आयला who's a council member, वो एक सेशन डिलीवर करेंगी on leadership skills जो उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था 20th of अक्टूबर को. और उसके बाद Stuart Dunlop, who's the regional director for ACCA, he will come in and he will speak with you people as well. So quite a few interesting things coming ahead. But I want all of you to be prepared before I put you in front of these individuals, Ayla and Stuart. Okay? Okay, so rest of the teams, I'm waiting. ये तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है यार. 30 लोग बैठे हुए हैं. एक छोटी सी प्रेजेंटेशन 5 स्लाइड्स की डिलीवर करनी है. केस स्टडी पड़ी होनी चाहिए. मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज्यादा बेसिक कंटेंट है रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आप लोग आज करने जा रहे हैं. सबसे बेसिक यही हो सकता है. इससे ज्यादा बेसिक नहीं हो सकता कुछ भी. आप सब लोग एसीसी के एफिलिएट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं. आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, राइट? आई एम श्योर आप लोग कॉन्फिडेंट हैं in delivering this content also. So please be prepared and I would want के in the next 10-15 minutes हम presentations kick off करें. मुझे अभी तक ग्रुप 2 ग्रुप 3 सॉरी ग्रुप 2 तो है अपनी जगह पर. ग्रुप 1 ग्रुप 3 4 5 मुझे इनके पार्टिसिपेंट्स के नाम नहीं पता चले. Are you people typing in the WhatsApp group? If yes, I can read the names from there. बाय द वे ये ग्रुप 6 जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता. मेरा ख्याल है ग्रुप 5 तक एग्जिस्ट करते हैं. और लाइक आई सेड अभी ग्रुप 1 किसी ने टेक ओवर नहीं किया. ग्रुप 3 ग्रुप 4 ग्रुप 5 ये सब अभी टेक ओवर नहीं हुए. ग्रुप 6 की भी बात ही नहीं कर रहे हैं हम तो. सर ग्रुप 3 में इस वक्त 13 पार्टिसिपेंट्स हैं एंड 13? ग्रुप यस. अच्छा आगे. एंड ग्रुप 4 जो है उसमें ऑलरेडी 7 थे. उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो ग्रुप 1 को कुछ पार्टिसिपेंट जाके ज्वाइन कर ले. आई एम ठीक श्योर है. कि वो अब वहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेंगे. ग्रुप 5 में इस वक्त 2 है बट आई थिंक वो शायद अभी उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया. या शायद मेरी ओके आवाज़ वहाँ तक उनको नहीं आई वाज नॉट ऑडिबल. तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ उनसे बात करके ताकि ठीक है. इसमें कुछ मैं तो बता सकूँ. अभी आपके पास ग्रुप 1 के अंदर लोग मौजूद हैं. इफ आई कैन गो वन बाय वन. सर ग्रुप 3 में अगर आप ग्रुप 3 में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं. अगर यहाँ पे 13 लोग हैं मेरे ख्याल में इनको हम इनवाइट कर लेते हैं ग्रुप 3 जिन्होंने काफ़ी काम कर लिया अपनी प्रेजेंटेशन पे. अच्छा चलें. आई थिंक वील गिव देम 10 मोर मिनट्स. लेट्स ब्रिंग देम ऑन. 13 लोग हैं. ठीक है कोई बात नहीं. 13 के साथ ट्राई कर लेते हैं क्या बनता है. मैंने कहा भी था 5 इंडिविजुअल्स पर ग्रुप. 5 इंडिविजुअल्स पर ग्रुप. चलें ठीक है. मुत्तहिद वी आर वेटिंग. ओके. ये स्टे पुट एज वेल. जैसे ही लोग वापस आते हैं वी स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन.
Mutahid, any update? Is anybody ready with the presentation? Sir, let me check with them. जी मेरा ख्याल अब टाइम हो गया. We left with about 40 minutes only before we call the session off. सर ग्रुप 2 की प्रेजेंटेशन रेडी है और वो ज्वाइन करने लगे, रीज्वाइन कर रहे हैं वेबिनार को. ठीक है, ओके. Sir, group 3 presentation is also ready. अब हम वेबिनार में ज्वाइन करें. Raise your hands. अर्शिया, मैंने आपको ऑलरेडी पैनलिस्ट बना दिया हुआ है. आपके बाकी ग्रुप मेंबर्स, if they can please raise their hands. राइट सर. मोहम्मद राफे, आप ग्रुप 2 का पार्ट नहीं है? नो सर, हमारी टीम में हरीफ अर्शिया हैं. राफे,
नो सर, जाफिर हमारी टीम में नहीं है, हमारी टीम में आपकी मारिया जलाल है जी, अरीब अली कयानी है, मारिया जलाल एक है, सेकंड, दानियाल अहमद है, दुर्र शहवार है। अरीब अली कयानी ने पैनलिस्ट, यस, मारिया जलाल ने पैनलिस्ट, ओके जी। और कौन कौन है? मैंने 3 लोगों को कर दिया है। दानियाल है, सर दानियाल अहमद है और दुर्र शहवार है। यस, तो शहबार है। आप सब लोग हैंड रेज कर देते तो आसान हो जाता। चलिए, अब आप में से स्लाइड्स किसके पास हैं? मेरे पास। अर्शिया, आप में से स्लाइड्स किसके पास हैं? प्रेजेंटेशन। सर मेरे पास है। सो यू आर द प्रेजेंटर। यस सर। सर हम जी हाँ, इकट्ठे लाइक मैं स्टार्ट करूंगी और उसके बाद प्रेजेंटर दानियाल हैं, टेक ओवर अपनी स्क्रीन अब करेंगे। आप शेयर कर सकती हैं। राइट सर। अर्शिया, are you sharing your screen? Sir, can you see my screen? Not yet. I already have shared it. I guess there is a delay due to bad network. Could be that. जी, अब I can see your screen. Right, sir. Can I start? जी, आप में से कौन-कौन प्रेजेंट करेगा? I hope everyone. Sir, Maria present नहीं कर सकती हैं because she is in hospital with her cousin. हाँ, लेकिन उन्होंने हमें हेल्प ओह, किया है अच्छा। प्रेजेंटेशन मेकिंग में। मैं प्रेजेंट करूँगी, दानियाल प्रेजेंट करेंगे। और अरीब और दुर्र शहवार? दुर्र शहवा कंक्लूजन प्रेजेंट करेंगी और अरीब आई गेस वो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। चलें, ठीक है, go on then. All right. Starting with the background, जो case study आज हमारे साथ शेयर किया गया था, it was like Mr. Bilal. It was about Mr. Bilal, who is a 35 years old employee, and due to some domestic issues, he is trying to shift into a separate house from a joint family system. और उसके लिए he is like looking for both the options, either to rent a house or buy a house. Or to either to rent or to buy. He is looking a house and somewhere nearby Wapta colony because his parents' house is there and he wants some house in a nearby locality. And also he is looking for an 8 Marla house. Regarding finances, Mr. Bilal has like a 5 million amount which is being inherited to him from his father. Not inherited because it was gifted to him by his father. और एक तो उनके पास वो इन्वेस्टमेंट है और सेकेंडली बैंक से लोन भी ले सकते हैं इफ ही इज लुकिंग फॉर अ बाय ऑप्शन और to make a decision he contacted one of his friends who is a real estate agent to help him out making a decision, Mr. Fezan. And Mr. Fezan has showed him several houses in the nearby locality, and most suitable area was 11 with area B that was near to Wapta colony as well, and it's also a good location. So he found like he shortlisted a home of 8 Marla, and now they are looking for either to buy a house or rent a house. And before looking into the decision if you should buy or rent a house, we can look on the residential real estate market in Lahore.
Lahore is a metropolitan city, densely populated, और population तो उसकी काफी speed के साथ increase करती जा रही है. Like in last 20 years, it's double. The rate is double from past 35 years. लेकिन जो टाउन प्लानिंग है वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं है. एक तो नेचुरल ऑर्गेनिक वे में पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, और दूसरा जो स्मॉल सिटी से लोग माइग्रेट करते हैं टुवर्ड्स मेट्रोपॉलिटन सिटी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, उसकी वजह से भी लाहौर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेजी से इंक्रीज कर रही है. लेकिन टाउन प्लानिंग उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, और दूसरे जो रिसोर्सेज हैं वो भी उसके अकॉर्डिंगली डेवलप नहीं किए गए. लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो हम उसी पे फोकस करेंगे. जो प्लानर्स थे, गवर्नमेंट ने ऐसा उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, ऐसा प्लान नहीं किया, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसने इसको टेक ओवर कर लिया. देयर वाज अ बूम फ्रॉम फॉर प्राइवेट सेक्टर, और private sector क्योंकि they were looking for making profits, so they targeted only a specific class of our audience, like जैसे DHA है, पहरिया टाउन है, अल्लामा इकबाल टाउन वगैरह. they इन्होंने बड़े बड़े घर बनाए, like one canal, two canal houses, and their target was elite class or some where upper middle class who can afford such big houses. Rates were also spiking up, and due to which it also took like a lot of time for these societies to be fully populated. Like DHA, it took more than 20 years for DHA to be fully populated. Same for Alamai Town, not for around 20 years, but it also took a lot of time for them to be fully populated. Also, the real estate developers, they usually procedures which are which are being made by LDA Lahore Development Authority. There is a specific procedure. They need to own land 100%. There are several NOCs which they are required to gain from government authorities, from WAPTA and from other institutes, on which they can develop. They can do development work, and then they can only then they'll be able to sell the property or land. But the society, they do not follow the rules. They just acquire the land, and before getting all of the NOCs, they start selling the files. And people they do not have many options available in the market, and people also cannot afford the expensive houses. So at that time, they tend to invest in such housing societies, क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट प्लान्स भी ऑफर करते हैं, और जब तक उनके लीगल वर्क कंप्लीट नहीं होता, they relatively offer less price. Based on that, people tend to buy, because owning a house is really very difficult for most of the population in Pakistan. And then if we talk about what is the options available to Mr. Bilal, the case study which we are being studied, I would like to call in Mr. Daniel Ahmed to please take over the presentation and continue with exploring other options. Thank you. Moving toward the exploring other opportunities. If he buys, then what are the opportunities for Bilal? So first, the broker will charge 1% of the value of the house, and if he rents, the broker will charge 15 days rent of the property. Similarly, the transfer fee of the house will be 600,000, which is the one-time amount. Similarly, he can get a maximum loan of 1.5 million from bank, and bank will offer a loan on 5% instead of the 12% market rate, and he can save us 7% interest cost that from that he can save us 7% interest. Similarly, he has 5 million which is inherited from his father's property, and he can get a tax benefit on home loan under the income tax act. If we compare annual rent and the loan payment which he will pay to bank, is the annual rent is 6 lakh 90,000, and the loan payment which he has to pay is 5 lakh 75,000, and the difference is 1 lakh 15,000, which is clear he will save when he buy the house. And if he rents the house, the annual increase of the rent will be 2%. So it's clear he has many opportunities if he buy the house, and
his family is also agree in buying the house instead of rent the house. Now I would like Duresh Shivar to conclude this presentation. Duresh Shivar, are you here? Yes, I am here. Please change the slide. First of all, Sir Harun, I am extremely sorry for the last class, but believe me, I'm unable to connect. I was unable to unmute my mic. Even I'm not able to type something. So sorry. And coming to the case study, we are in favor of having a buying option. The reason behind it is that initially Bilal was thinking to have 18% return. So from the asset management project, so he is interested to have 18% annually. So if we'll choose to purchase the property rather than rent option, so bank will provide around 5% instead of 12% for the loan. So around 7% would be saved from here. Apart from that, tax savings will also be received by him. And one of the biggest qualitative aspect of selecting this decision would be like his family is more inclined to have a house, on investment basis rather than on rental basis. So in addition to it, 1% he has to pay one of cost for purchasing option, like 1% of the property. So only this is the one of cost, whereas if he is supposed to choose rent option, so he has to pay brokerage fees and then annual increment of 2%. So for Bilal and his family, buying decision would be more feasible than the rental option. Thanks from my side. Thank you very much. We are not taking questions right now. Is the next group ready for the presentation? जिन लोगों ने present कर दिया है, group 2 ने वो अपने mics please mute कर लें. Group number 3 probably was ready. Yes, sir. Group 3 is ready. Group 3 में दानियाल अहमद तो नहीं है. दानियाल तो already present कर चुके हैं. दानियाल सर ग्रुप 3 में रिजवान है, शुएब है, साद है, मुर्तजा, रिजवान, निमरा, महमूना, राबिया और सारे अपने hands raise करें please. Please, all right, this is a big group. सब लोग अपने hands raise करें जो इस group में है. So रिजवान यूसुफ, मैं आपसे start कर रहा हूँ. एक पैनलिस्ट. दानियाल अहमद तो पिछले ग्रुप में थे, राइट? मोहम्मद राफ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. मोहम्मद राफ जी, अस्सलाम वालेकुम. एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ. Just give me a second. Wait. मुझे सबको पहले ग्रुप में लेकर आने दो. बहुत सारे लोग हैं. निमरा भी ग्रुप में ही है जी. somebody please confirm to me. मुत्तहिद प्लीज अपना माइक अनम्यूटेड रखें, मुझे बताते जाएं. निमरा भी इसी ग्रुप में है? बिल्कुल, निमरा भी है. राबिया शरीफ भी हैं. साद अजलाल. जी बिल्कुल, साद अजलाल भी हैं. सलमान अली. और सलमान अली मेरा ख्याल है किसी और डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है इन्होंने. सलमान अली, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ. आपको मैं पैनलिस्ट, आपने शायद किसी और डिवाइस से ज्वाइन किया हुआ है. थैंक यू. मैं फोन से ज्वाइन किया है जी. एग्जैक्टली. रिजवान, आप प्रेजेंट कर रहे हैं? Who's the presenter from this group? I'll be sharing my screen. जी, अब आपके पास ऑप्शन शेयरिंग की आ गई होगी, तो प्लीज शेयर योर स्क्रीन. और इन द मीनवाइल अगला ग्रुप तैयार रहे प्लीज. रिजवान, only 10 minutes. I know there are too many people in your group.
but 10 minutes Okay, only. sir. कौन present कर रहा है? Who's speaking? It will be me, Miss Memuna, Salman, Miss Rabia, Salman, and Saad. And और बाकी free rides थी? no, I think I hope I'm not missing somebody. Okay, चलिए नहीं, let's हमने begin. decide किया. Let's begin. Okay, जी रिजवान आप मुझे मिस कर देना आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? We can see your screen. Please continue. Okay, this is about buying or renting. You have to make a decision of a lifetime, basically which way to go. So we're following one person. His name is Bilal Malik. He's age 35 and he's in stable employment in the bank. He has a small family with wife, 2 kids, and his assets are simply 5 million rupees in a long-term saving accounts, at which he's earning 8%. Otherwise, he has no other significant assets. He's living in his parents' house. So now he's looking to move out. So after comparing the market, he has narrowed down a house in DHA phase 11 area B. He found a house. He found an 8 marla house, and he has to decide 2 things about this house. Either he can rent it at 57,500 per month, or he can buy this house for 13,800,000. So if he rents the house, he'll have to spend a one-time cost of 15 days rent, and his rent will increase annually at 2%. But his 5 million bank saving, he'll get to keep it, as well as the profit he'll be earning regularly on it, which he could use to pay off some of the rent. But on the other hand, by not buying a house, he'll lose the potential of having a house and the capital gains that he could earn on that house. And he'll also lose a massive tax allowance, because if he takes a loan, the government allows him some tax allowance and he'll lose on it. And there's a tax loss on that. On the other hand, if he buys the house, he will gain a property that is a significant asset of itself. Having a solid roof on his head is a saving of itself, but he'll have a property that will have a 6% capital gain in the next 2 years. There's a value earning property. But until that he gets a house, he will lose his liquid savings. The bank account is a liquid asset, and he will lose that, as well as the profit on it. And until he pays off the loan, he will have nothing, because for 10-20 years the bank will have the rights of the house. They will have a lien on the house. As for expenses, he will have to pay 1% brokerage fee, as well as a transfer charges. For buying, he has a small benefit, that it's a small but significant benefit, that he can get a loan on much better rates. Instead of the 12% the market he has, he can get a loan on only 5%. That's a 7% percentage point savings on the loan interest, as well as he'll have a significant tax saving, because the loan interest is expense on which he could get tax savings, and it will pay off. It will be set off with the tax he pays, because he pays 30% tax on a salary of 155,000. So we make, for the assumptions, Ms. Memuna will take over the presentation. Ms. Memuna. Yes, sir. Ms. Memuna, kindly take over the assumptions, please. Yes, sir. Assumptions में हमने ये assume किया है कि बिलाल सैलरी उसकी कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज नहीं करेगी. एम्प्लॉयर ने क्या पता लिमिट लगा दी हो कि सैलरी इंक्रीज नहीं कर रही हो, कन्वीनियंट हो. उसके बाद टैक्स रेट जो हमने मार्केट रेट टैक्स रेट कांस्टेंट एज्यूम किया है कि ये बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा, क्योंकि ये बेनिफिट होगा अगर टैक्स सेम रहे. और उसके बाद जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयड रहेगा, और वो अपनी एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म नहीं करेगा. अगर वो कर देगा तो उसको लोन की अमाउंट पे आउट करनी पड़ेगी, और उसको चार्जेस बेयर करने पड़ेंगे, लोन के ज़्यादा फिर बेयर करने पड़ेंगे, तो इसलिए उसको नुकसान होगा. तो हमने एज्यूम किया है कि सैलरी सेम रहे, टैक्स रेट सेम रहे, एंड बिलाल एम्प्लॉयड रहे 20 years तक. थैंक यू. Sir Rizwan Yusuf, kindly continue it.
हेलो, आपको आवाज आ रही है? Yes, we can hear you. Rizwan, you can go next. Hello, am I audible? Yes, yes. Okay, perfect. So basically, in terms of the renting figures, we are assuming that he has to pay a monthly rental of 57,500, and there's an annual increment of 2% on the annual figure, and he has to pay a one-time broker's fee of 28,750, which is about 50% of the monthly rent. And the opportunity cost here is that if he decides to rent the property, he will not be getting any tax allowances, which would amount to about 4.15 million over the period of 20 years. And the total cost of renting the decision would be about 8.934 million. And I would hand this over to Salman to proceed with the next slide. Thanks, Rafi. We have worked out the values for the buy option. Here we are obliged to pay a broker fee of 1% of the capital value of the house, that is 13.8 million for area B house for 8 Marla in this DHA Rubber. Then we got these transfer charges and own equity that we have that the owner has inherited from his father, that is 5 million. And then we worked out the remaining loan required, that is to be taken from the bank. So it came out at 9.5 million, and it is payable at 5% interest rate. So after making the repayments and taking into account the tax benefit that he's going to gain, there is a significant value to be gained from the capital gain on property, since it is assumed that the capital appreciation of the value of the property will remain quite high for the foreseeable future. So that is a clear indicator stating supporting our decision that we are to go for this buy decision. So I'll ask my next colleague to present you our conclusion. Assalamualaikum everyone, this is me Rabia Sharif, and here's my slide which is the comparison for both options. The first one is if Bilal has to rent out, has to pay the rent. If he goes with the renter decision, he has to pay the amount of 8934.57, as there are no inflows, cash inflows related in case of rental decision. On the other hand, if he goes with the purchasing option, there are certain inflows of cash inflows which are related to this option. And if we consider the outflows are amounting 41447. 0.12. So it is if we compare these amounts, it's a bit obvious that there's clearly a gain uh, in comparison of when we compare the both options. When coming with the next slide, which is can I see the next slide, Rizwan? So here's the slide of recommended decision. We come up with a decision that to purchase a new house is a better option. As I have discussed in previous slide, that if he goes with the purchasing option, he'll uh, he'll be gaining a certain amount of in the form of inflows. That inflows could he could get that inflows if he sublet the house after purchasing, and the inflows could be in form of intangibles also. That a massive capital gains, uh, if we there would be a massive
capital gain as well as a significant tax benefit of 200,000, which is clearly given in case study of 200,000 tax allowance in income tax, which is outweighing the expenses related to it. And secondly, if he sublet the house, there would be an other income stream generating at his end, so it could be another source of income, and he can gain extra benefit from that. Third point is that if as in today's time, there is a devaluation of money in Pakistan, so Pakistani currency is not is going under devaluation. So to retain money in income accounts, in bank accounts, it is not that it's not that beneficial. So it is much of good to invest it in somewhere to get long-term benefit. So to buy a new house uh, would be a good decision. Thank you. This was group number 3, right? Yes, sir. Sorry, was this group number 3? Yes, sir. This was group number 3. All right, thank you. Hum questions. Ji, we'll take questions afterwards. Who's the next group? Please raise hands. I'm looking at the attendees. Next group, please raise hands. There were 5 members. Hands. जी सब लोग hand raise करें please. And जो presenter थे पिछले group में वो सब अपने mics mute करें. So अभी तक सिर्फ नासिर महमूद ने hand raise किया है. नासिर आपके group में और कौन-कौन लोग हैं? Please unmute yourself. सर मोहसिन, मोहम्मद ईशान, अम्मार रहमान, आमिर, कुरतुलैन. There are 5 members in the group 1. मुत्तहिद आपने इनको ऐड कर लिया है? कुरतुलैन यहीं पर हैं अभी तक, इनको मैं पैनलिस्ट बना रहा हूँ. So right now I have, और आप लोगों का प्रेजेंटर कौन है? Who has the slides? Waiting. Hello. Who has the slides? Kurutulan, you can unmute yourself. आप में से slides किसके पास हैं? Oh, okay. Can you hear me? Can all of you hear me? Yes, sir, we can hear. जी slides किसके पास हैं? Group 1. We're taking a lot of time, otherwise मैं pass करने लगा हूँ इस group को. चलिए मुत्तहिद हम we're moving on with the next group. Which other group is ready? मुत्तहिद का check कीजिए. सर वो 4 and 5 में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं था. आप दलीदी ग्रुप 5 में उनको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वो ग्रुप 1 ज्वाइन कर ले. Okay. Yeah, I think हम
इस ग्रुप की प्रेजेंटेशन को पास करने लगे हैं because they're not responding. I'm not sure what's wrong with them. All right, so we have questions and answers for the two groups जिन्होंने presentation की है. Okay, I'm going to ask the first question और जो बाकी लोग attendees में बैठे हुए हैं they'll ask the questions after me. Okay, so my first question is आप तमाम लोगों ने अभी कैलकुलेशंस प्रेजेंट की हैं, ये प्रेजेंट वैल्यू पे ली हैं या फ्यूचर वैल्यू में ली हैं या उनको कन्वर्ट किया है इनटू प्रेजेंट वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू से कंपेयर किया है. This is what the exercise was really about. So who will answer first? Duresh Awad, आपका कैमरा ऑन है, if you can switch it off please. Thank you. जी सर फॉर ग्रुप 3 हम लोगों ने प्रेजेंट वैल्यू के फिगर्स लिए थे कंपैरिजन के लिए. तो आपने इनको फिगर्स को कन्वर्ट किया था इनटू प्रेजेंट वैल्यू? जी जी, हम लोगों ने एक पूरी एक्सेल फाइल प्रिपेयर की थी जिसके फिर हम लोगों ने जो फाइनल नेट फिगर्स हैं वो हम लोगों ने अपनी प्रेजेंटेशन में डाली थी. Can you share that over here? Sure. राबिया शरीफ, आपका माइक अनम्यूटेड है, प्लीज को म्यूट कीजिए. कौन शेयर करने लगा अपनी स्क्रीन में, उनको प्रेजेंटर बनाओ. करंटली रिजवान प्रेजेंटर हैं. ग्रुप 3 बोल रहा था जी, ग्रुप 3 में कौन है? ओके, ऑलराइट, कैलकुलेशंस दिखाएं मुझे. ओके ओके ओके, आपने कहां पर इसको कन्वर्ट किया है इनटू प्रेजेंट वैल्यू? इन ऑल द फ्यूचर पेमेंट्स आल्सो एमोर्टाइज कहां किया है और उनको प्रेजेंट वैल्यू में कहां कन्वर्ट किया है? ओके ऑलराइट, ओके, ये आपने इस पे 2% इफ दिस इज द रेंटल, सो इस पे आपने 2% ग्रो किया है, पर एनम भी इस पे अप्लाई किया हुआ है? Yes, sir, we did. Okay. All right. चले ये बताइए, if anyone has given it a thought, how will the situation change if Bilal Malik had not been a bank employee and he gets the loan from a bank at market rate, which was 12%? How will the decision change? So their loan payment will be increased. Obviously, the loan payment will be increased, but will the decision tip over in favor of rentals? Will it remain buy? It will cover the rentals. It will cost the rental amount. सर आई थिंक अगर हम लोग लाइक ओवरऑल फिगर्स को देख रहे हैं लाइक गेन्स के लिहाज से आई थिंक बाइंग ऑप्शन स्टिल रिमेन करेगा.
क्योंकि like there's a cost of living, right? And anyways उसको like एक outflow तो एक amount का करना ही है, even though वो rent करे या buy करे, but like जो थोड़ा बहुत change आएगा वो आएगा like amount अगर ऊपर नीचे होती है उस पे, तो end of 20 years वो जितने भी outflow कर रहा है rent की like अगर वो rent करता है property को, end of 20 years he has nothing to show for it, like but अगर वो buy करता है तो like I think overall जो एक intangible value जो उसको मिल रही है कि एक उसे comfort होगा कि हाँ भाई end of 20 years I'm gonna have something to show for it, और फिर वहां से वो like further decisions भी ले सकता है, like वो उसे rent out कर सकता है या probably upgrade कर सकता है if he wants like a bigger property. So the options for him are endless, like if he goes down the path of purchasing the property. I think चलें वो social concerns जो हैं वो इस वक्त हम discuss नहीं करते हैं, they're moving out because of family reasons and not purely because of an investment reason. But इसको हम देखते हैं. Any other questions from the attendees who have not presented? I am going to unmute everyone. सब लोगों के पास microphone control है, and in the meanwhile I'm going to throw a few questions at the presenters. अभी तक group 2 ने कोई question मुझे answer नहीं किया. Group 3 ने Sir, answer किया है. Sir, I answered one question. जी दानियाल आपने contribute किया है, I understand. अच्छा जी, आप मुझे ये बताइएगा how difficult was it to make the presentation or speak fluently? I'm happy because most of you, were pretty fluent in the presentation. Okay, there are some improvements required, but I think overall, if I look at the way people presented, I think that was fairly okay. It's just that you need a little bit of practice. लेकिन मैं ये भी बताता जाऊं that presenting in front of about 38 individuals as compared to a big audience, consisting of people who are members of the board or who are stakeholders of a company, I think that's a very different ball game. But I'm very happy. The presentations were fantastic. How much to show in the presentation, whether to show calculations or not, that was a decision that you had to take. And I think very well taken. It is never a good idea to show too many numbers. However, there is one thing that that I would suggest, and that is that graphical representation or presenting infographics instead of text and bullet points. That's invisible. Okay. Bullet points can really be for your own convenience. So you can have a look at what you have to speak. वो आप अपने notes में add कर सकते हैं. लेकिन infographics, for example, आप बिलाल मलिक का profile draw कर रहे हैं, would have been interesting अगर आप इसका एक avatar बना देते, उसके ऊपर labeling कर देते, age 35, wife and 2 kids, or maybe 2 wives and a kid, I don't know, a wife and 2 kids. 5%, 5 million worth plus padi हुई है, maybe a stack of money. So infographics do better than bullet points. Okay. I understand इस पर time कम था हमारे पास, लेकिन I'm sure when you're actually doing your presentations, you should consider that. Okay. Okay. Any questions from the audience? Please raise hands if you want to throw a question, a challenge question on them, on these groups. Okay, Usman Khalid कह रहे हैं he has an audio issue. He's asking, I want to ask, what is the tax benefit? It is 200,000 or 350,000, which is 150 plus 200. 150 against section 80C and 200 against section 24. Gee, who will respond? Let me go back to group 2. Daniel, Ashia, let me go back to this group.
Hello, anybody speaking? Yeah, I think I can answer him. Hello? Am I audible, sir? Yes, Duresh, go on. Okay. See, friend, as far as 1,50,000 PKR is concerned, so this is going to be provided if there is a principal payment, principal amount ki payment hogi. So you're supposed to have 1,50,000 that is allowed expense against the property. Whereas 200,000 is concerned, this is going to be allowed in a financial year if it is, you know, if it is financed through a loan. So interest payments के against आपको 200,000 का allow होगा financial year में, लेकिन अगर principal amount की payment हो रही है तो that's going to be 150,000. Okay, good, thank you. And okay, going back to questions. And is this 200,000 rupees? How much is that per annum? A reduction of 200 or up to 200,000 was allowed in the financial year for the interest payment on home. All right. So 200,000 rupees is per annum, which means it will be a recurring tax saving for the life of the loan. Duresh Ahwar? Sorry, sir. जी ये 200,000 rupees per annum जो है, yeah, is that an annual saving or is it a one-off saving? it's per year, sir. So if you are paying monthly your interest expense, so it will be allowed expense for 200,000 in accumulated value. So in a year, right? In a year, right? So if it is to be, if the loan stands out for 20 years and the government policies don't change, doesn't that mean that this is going to accumulate for 20 years? Yes, no? per year. Right. So he's going to make interest payments for 20 years, right? He's going to make loan payments for 20 years. Yes, so this sir. 200,000 per year is going to be saving yeah. For each year, right? The next year, he once again save 200,000. Yes, sir. Oops. Yes, no? Yes, sir. He will save 200,000 over the 20 years because it is from government. Come again. 200,000 over 20 years is it per year? Read the Per case year, study, sir, read the it is section. per year. He will save 200,000 per year. But the loan payments, if he pays the loan amount over the 20 years, then he can save 200,000 per year for the 20 years. Right. The total saving is going to be 200,000 multiplied by 20 if the loan is to continue for 20 years. Isn't that Yes, right? sir. Yes, right, sir. Great. Thank you. Any other questions? Assalamu alaikum, sir. Ji, walaikum salam. Sir, I just want to ask one question that in case study, they mentioned that they not follow SOPs and how it can affect our decision that we can buy or rent. I don't know why this case study impact on us, on decision making power. Like some LDA not follow the, like some authorities not follow rules and regulations. So how they can affect our decision? So sorry, I didn't understand your question. It's a simple decision from the perspective of an individual who can rent a property or who can buy a property under certain circumstances. I think जो group 3 था उन्होंने set of assumptions to put forward किए. I think they were very valid and it is always good to have assumptions put in place.
Okay, everything remaining So constant, which means I just want to know कि exactly. तो इस पूरी केस स्टडी में एक मेंशन था पैराग्राफ कि लाइक एलडीएस वाले या समथिंग एसओपीज फॉलो नहीं कर रहे. मुझे सिर्फ इस चीज का कि इस पूरी केस स्टडीज में हम लोगों को किस तरह इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे डिसीजन मेकिंग पे कि rather we go for rented or for buy your own. Excuse me, Okay, can you मैं आंसर mention करना which चाहता part? हूँ. जी, Rizwan. मैं सिंपल क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वो जो एसओपी फॉलो ना करने वाली बात है, उससे बस हमें ये सिंपली बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है कि उसने क्यों डीएचए वाला ऑप्शन उसने लिया, क्योंकि उसके पास लांगबाल टाउन और क्या कहते हैं वाबडे टाउन की भी ऑप्शंस थी. अगर आप देखें लास्ट में, तो ये मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अगर आप लोगों को नजर आ रही हो, तो ऑप्शंस बहुत हैं. डीएचए फाइनलाइज करने की एक्सप्लेनेशन है ये है कि एसओपीज ना फॉलो करने की वजह से एलडीए की सोसाइटीज, इसलिए उसकी क्या कहते हैं उससे जो परचेज ऑप्शन है वो लिमिट कर रही है, बजाय इससे कि वो वापडा टाउन या एलंगबाल टाउन में ले. वो डीएचए में इसलिए ले रहा है क्योंकि उसके एसओपीज पे डिपेंड करना चाह रहा है, क्योंकि डीएचए ज्यादा लाइकली है एसओपीज फॉलो करने के बजाय इसके कि वो दूसरी जगह पे, इसलिए उसने दूसरे ऑप्शन को फिर कैंसिल करना पड़ा उसको. ये हम क्योंकि बेसिकली हम नैरो डाउन कर रहे हैं ना कि डीएचए ब्लॉक 2 एरिया 11 फेज बी तक कहां क्यों पहुंचा, उसने कहीं और क्यों नहीं लिया. तो बेसिकली ये स्कोप है एसओपीज फॉलो ना करने की वजह से, और बाकी ऑप्शंस को कट ऑफ कर रहा है बेसिकली. तो ये Okay, thank स्टोरी you. करते करते पहुंच रहा है फिर वो अपने आखिर उस घर तक. Agreed. Thank you, Rizwan. Appropriate answer. Okay, Varda has given a message, and this is the last message I'm going to read out. Why have we not looked into the possibility of savings if invested in areas and locations other than just DHA 11? So, इसी का जवाब अभी रिजवान दे भी रहे थे. If you put aside their interest of living near family home. So, Varda, I think अभी जो रिजवान respond कर भी रहे थे of not going into a scheme, a residential scheme by the regulator. I think उसकी main reason SOPs को follow ना करना mainly was the reason. So, and that's why DHA 11 was picked up. Anyways, I think good conversation, good presentations. मैंने यही assignment और यही task जब दूसरे group को दिया था, so I had to ask them to go back and present again or prepare their presentations again. In this particular case, I am quite happy with the way presentations have been done, although only 2 presentations have been done. So जो बाकी 3 groups हैं, उनकी presentations नहीं हुई हैं. I'm not going to let them go like this. जो बाकी 3 groups हैं, Thursday को at the beginning of the session, and the session begins at 6:30. Okay. So उनकी presentations run करेंगे और हम अगली case study की तरफ जाएंगे. अब today in the evening, Muttahid is going to share the other case study with you. Okay. This case study is about a corporate dairy farm. Feasibility of a corporate dairy farm. Okay. Without going into unnecessary details, keep it succinct, short, up to 5 slides. Okay. And what I'm going to do is, जिन लोगों ने आज present किया है, they don't have to present the next case. They're just going to read the case, come up with their questions, and they're going to be the audience next time. Okay. आपने जिन लोगों ने present किया है आज, इनके नाम note कर लें. And they are going to be the audience next time. जितने लोगों ने present नहीं किया, पहले वो जो 3 groups हैं जिन्होंने present नहीं किया, they will make a presentation on the real estate case. और उसके बाद जो बाकी groups बनेंगे, they are going to make a presentation on the dairy corporate dairy farm case study, which is a longer case study and another interesting one.
एंड स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि हम इस प्रोग्राम के शुरू में काफ़ी डिटेल में डेयरी एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग के हवाले से बात भी करते रहे हैं. So this is going to be very interesting and relevant. Okay, did you people enjoy this activity? Those who presented, this question is to them. Those who did not present, of course, they were enjoying. They were watching the conversation. They were watching the presentations being shared. But the ones who have presented, if they can answer. Sir, I would like to speak on behalf of Group 3. Okay. हमने बहुत इंजॉय किया. हम हमारी टीम ना शुरू से बिजनेस मॉडल के वक्त से चलती आ रही. मिस राबिया में, मिस मेमूना, साद, सलमान और बाकी लोग हम तब से चलते आ रहे हैं. और हमारी टीम सैमसंग केस स्टडी में भी थी, अभी इस केस स्टडी में. तो जैसे ही आपने शेयर किया, मिस राबिया ने फौरन हमारी व्हाट्सएप पे कॉल मिलाई और हम सब ने टीम्स ग्रुप बनने से पहले भी उसी वक्त कॉल मिला के हम सब के डिस्कस करना हमने शुरू कर दी था ये केस स्टडी. और क्या कहते हैं उसे हमने अपने रोल्स असाइन कर दिए. फिर आस्ते आस्ते जैसे मैं पीपीटी बना रहा था तो हमारे साथ वाले के जो थे वो क्या कहते हैं उसे ये स्लाइड बना रहे थे और हम मिल के काम कर रहे थे. और हमने जब तक मुतहिद साहब ने हमें कॉल किया तब हमने ना सिर्फ हमने प्रेजेंटेशन बना ली थी बल्कि हमने अपने रोल्स भी साइन कर दिए थे. हम सब ने कि किसने क्या करना है. तो हमें काफी एंजॉयमेंट मिली और हम अब काफी सीख चुके हैं. Very nice, and it shows also. जो आपने जितनी डिटेल में प्रेजेंटेशन दी है, जितनी आपने डिटेल में वर्किंग की हुई थी, I think it shows as well. The other presentation was also उन्होंने क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर पार्ट प्ले नहीं किया, but they had also I think put in an effort. This is the group उसमें जो कि अर्शिया probably देख रही थी, Daniel and Arshia and others. So thank you very much. My purpose will only be served once everyone in the group A plus S would have come forward, made a presentation. Okay, come forward, made a presentation. Panelists बने, presentation deliver की. अभी भी मैंने आज बहुत से नाम नोट किए हैं. So for example, आमिर रहमान, अरीब कयानी, दानियाल चले कुछ तो बोले हैं, बिल्कुल. राफे खामोश रहे हैं. निमरा कुछ नहीं बोली, कुरतनैन कुछ नहीं बोली, राबिया शरीफ ने प्रेजेंट किया है. So 50% of these 12 individuals who joined as panelists have presented. मैंने तो contribute And the किया था experience for them, I can tell you, will be. I know. जो experience presenters का है वो बिल्कुल different होएगा from the ones who not presented. Fine, they have played their part, but when you're making a presentation, that's when you take the credit for your work also. It's just like you've done your work, but you're not ready to take credit for the work you've done. Anyways, great job. Thank you very much. Good activity. And मुत्तहिद आप प्लीज कॉर्पोरेट फार्मिंग वाला जो केस है वो व्हाट्सएप ग्रुप में इनके साथ शेयर कर दें. मैंने रूल्स बता दिए हैं. जिन्होंने प्रेजेंट नहीं किया, जो अटेंडीज में हैं, वो प्रेजेंट करेंगे. और जिन्होंने ये केसेस प्रेजेंट किए हैं वो सारे के सारे अटेंडीज में बैठे होंगे. तो अटेंडीज प्रेजेंट कर रहे हैं, ये रोल स्विच हो रहे होंगे. ओके. इसके अलावा जिन 3 ग्रुप्स ने रियल स्टेट वाली प्रेजेंटेशंस नहीं की हैं, एक ग्रुप में तो मेरा ख्याल है कोई इंडिविजुअल था ही नहीं. जो बाकी 2 ग्रुप्स रह गए हैं, which is I guess group 1 and group 4. Isn't that right? So ये 2 groups जो हैं, they will be making a presentation on Thursday. We start at 6:30 to 7:30 हम real estate को देखेंगे और 7:30 till 8:30 हम लोग corporate farming को देखेंगे. चलिए जी. All right, thank you very much. I hope you enjoyed and इंशाल्लाह इस तरह की बहुत सारी केस स्टडीज अगर मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर कर सकूं. Just give me 1 second. I want you people to see in आप लोगों के पास क्या आने लगा है in the next few days. So मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ of the case studies I have downloaded for you. हमने buy versus rent. Can all of you see my folders? Buy versus rent, corporate dairy farm, ये हम करने जा रहे हैं. इसके अलावा इस Sero investment advisory जो है, again a case study from LAM.
which has been developed by an ACCA member who is an associate professor at the university. His name is Umair Haroon, Dr. Umair Haroon. He's an ACCA member. So ये केस स्टडी है, इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। इसके अलावा दो केस स्टडीज हैं, HP एंड नंबर्स डोंट लाई। ये दो केस स्टडीज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हैं। सो ये भी आप लोगों को मिलेंगी और आप इनके ऊपर भी प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे होंगे। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इट्स गोइंग टू, यू गोइंग टू एंजॉय दिस एंड यू गोइंग टू एंजॉय, आई मीन देयर इज गोइंग टू कम अ टाइम व्हेन यू गोइंग टू से पहले मैं प्रेजेंट करूंगा, आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस मोर। ओके, इंशाल्लाह। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।